Can you all hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any doubt from the previous class? We studied about the structure of the glucose. No, sir. No doubt. No doubt. No, sir. Good. So we said that glucose has a 6-carbon straight chain. How did we prove that the chain is straight? Yes. How did we prove that? First, the formula is C6H12O6, so that confirms it to have 6 carbons. Then we carried out the reduction with hydrogen iodide. And on reduction with hydrogen iodide, it gives us hexane, which confirms that it is a straight chain compound. How did we confirm the aldehyde group? Anyone? Sir, by adding mild reagent. Hydroxylamine. We treated it with hydroxylamine and HCN, and we found that it forms oximes and cyanohydrin complex, which confirms that it contains a carbonyl group. And then we oxidized it with a mild oxidizing agent. Which was the mild oxidizing agent? Sir, bromine water. Bromine water. And that confirmed that the given compound carbonyl is aldehyde. Then we carried out the acetylation and we formed a pentaacetate, which confirmed that it contains 5 OH groups. And how could we say that the 5 OH groups are on the different carbons? Because if more than one OH group is present on the same carbon, the compound becomes unstable. Got me? Yes, sir. Yes. So, after carrying out, is the whiteboard visible? Yes, sir. So, after all the discussions, we confirmed that glucose has this structure. Yeah. And on the last chiral carbon, as the OH group is towards right side, what designation was given to it? Capital D. Capital D. And then I started with that. There are some properties of the glucose which cannot be explained by its open chain structure. So we said that it does not give some characteristic reactions of aldehydes. What are the characteristic reaction of aldehydes? They form an addition product with sodium bisulfite and it does not form. All aldehydes, they react with 2,4-DNP, what glucose does not react. Third, the pentaacetate of the glucose does not react with hydroxylamine. That also confirms that straight chain structure is not able to explain some properties, and then presence of alpha and beta glucose. That cannot be explained by the straight chain structure. And the last phenomenon that I did with you was this. Do you remember mutarotation? Yes, sir. अब करूँ आगे start? Yes, sir. So now I'm going to mutarotation मैंने discuss किया था. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बताना मुझे mutarotation.
Mutarotation is the spontaneous change in specific rotation of an optically active compound to an equilibrium value. I'm just showing it to you. Just give me a moment. Is this visible to you? Yes, sir. Yes. अब तुम पहले अभी स्ट्रक्चर्स को मत देखना, अभी स्ट्रक्चर्स को मत देखो, तुम नीचे वैल्यूज देखो, ठीक है? वैल्यूज थोड़ी सी, लेट मी, okay, I will do it myself. So now I will first be sharing with you how did all this happen. देखना इस तरफ. This is H C double bond O C H. So this is the open chain structure of the glucose. Now देखना what happens. This pi bond shifts here. This carbon gets a positive charge and this gets a negative charge. Now, this fifth carbon का जो hydrogen है as H positive, that will shift here. Please try to understand. This is carbon number 1. This is carbon number 5th. So carbon number 5th का जो hydrogen है as H positive, that will go to the oxygen, and जो बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है, that will attach with this carbon. So there will be a bond formed. अब देखना यहाँ पर H C, this becomes OH, this is H, this is OH, third carbon पे OH H, fourth carbon पे C H OH, ये fifth carbon आ गया H and CH2OH. अब आप देखते हो जो फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है. So this is what happens now. Please have a look if you get it a bit clear. सर दोबारा एक्सप्लेन करना. देखो जो ये वाला H पॉजिटिव है ना, जो फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो OH है, उसका जो H पॉजिटिव है, that gets transferred to the oxygen of the first carbon because that is carrying a negative charge. Sir, fifth carbon इसलिए because it's chiral. हाँ, Okay, sir. अब जब H पॉजिटिव चला जाएगा तो जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. और जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है वो फर्स्ट कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से अटैच हो जाएगा. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ कार्बन. गॉट इट क्लियर? Yes, sir. अब ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. नाउ दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर and this is the cyclic structure. Got it?
सर ये Yes, sir. टॉपिक कौन सा है? We are doing muta rotation. Yeah, what we are doing is how can ओके करूं आगे? Yes, sir. अब यहां पर देखो ये अब देखो आपका सेंटर में जो स्ट्रक्चर है दैट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। मैं दोबारा से यहां पे शो कर रहा हूं, जो ये वाला हाइड्रोजन है it gets attached to this oxygen and this oxygen gets attached to this carbon. So there is formation of a oxygen linkage between the first carbon and the fifth carbon, and because of that it gets a cyclic structure, right? Yes, sir. ये अब ये देखना ढंग से, आई होप दैट विल मेक यू द थिंग्स क्लियर। अब लेफ्ट में देखो आपका है अल्फा का, दो अल्फा फॉर्म है और राइट में है बीटा, और सेंटर में यू हैव द स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब आप देखोगे जो आपका अल्फा, फिर आई विल मेक इट ऑल्सो इफ यू वांट। इफ आपके फर्स्ट कार्बन पे OH इज टुवर्ड्स राइट साइड, द आइसोमर इज अल्फा, एंड इफ ऑन योर first carbon the OH is towards left side, the isomer is called as beta. So in aqueous solution the alpha changes into the straight chain, ye wala, the beta also changes into the straight chain. So this phenomenon is called as muta rotation. Got it? Yes, sir. दोबारा से बना के दिखाऊं एक बार तीनों को? यस सर ठीक है, देखना, just try it. तो अब देखो सेंटर में आएगा आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब मैं इसको पूरे को ओपन अप करके दिखा रहा हूं, फिफ्थ कार्बन को। पहले इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखना एंड लेट मी नो। ये सबको क्लियर होता है? Yes, sir. नो, आई रिपीट माई सेल्फ, व्हाट्स हैपनिंग हियर इज दिस। आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन्स में दिस इज हाउ द रिएक्शन स्टार्ट्स। तो आपके फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो पाई बॉन्ड है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, so this hydrogen as H positive gets transferred here, right है ये? Yes, sir. अब आप देखोगे जब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, दिस ऑक्सीजन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। नो दिस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन विल गेट बाइंडेड अप विद द फर्स्ट कार्बन। तो ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड अब देखो H C, ये बन गया OH, ये फर्स्ट कार्बन है आपका। then this becomes the second carbon, then this is the third carbon, then this is the fourth carbon, ये फिफ्थ कार्बन का भी मैं सिर्फ H शो कर रहा हूं, और नीचे आ गया CH2OH। अब ये आ गया आपका ऑक्सीजन ऑफ द फिफ्थ कार्बन दैट हैज गेट बॉन्डेड टू द फर्स्ट कार्बन।
समझ हुआ ये? Now this is called as alpha D glucose. और इस साइड आ जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। फर्क आप देखना सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे है ये। Now the OH group is present on what side? On the first carbon. So left. Left side. So अब आपका ये आ गया आपकी ऑक्सीजन लिंकेज। Now this is beta D glucose. तो आप अब म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन आपके सामने पड़ी होगी, उसको उस डेफिनेशन को देखो। अल्फा ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी बताई गई थी? 111 डिग्री। Yes, sir. बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन वाज टोल्ड एज प्लस 19.2 और जो इक्विलिब्रियम बताई गई थी दैट वाज प्लस 52.5। Now I will be speaking of the definition of buta rotation and you keep on looking at the slide. So muta rotation is the specific spontaneous change in optical rotation of an isomer into an equilibrium value. So what do you see here is glucose originally has which structure? Cyclic. But when you take the aqueous solution, this cyclic structure as well as this cyclic structure changes into the open chain structure. Clear हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. इस स्लाइड को मैं अभी यहीं पे रख रहा हूं, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। अब आफ्टर हैविंग दिस डिस्कशन आई एम मेकिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, इस चीज को ढंग से सुनना। सो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज है उसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी हियर, जो आपका ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये वाला जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन द पेपर? सो दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग विद यू। सो इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब ये देखना, वी मेक अ हेक्सागोन। दिस इज कार्बन नंबर 1, तो ये हुआ कार्बन नंबर 5. बिकॉज आप अपने आप देखो आपके स्ट्रक्चर्स में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आर ज्वाइंड बाय द ऑक्सीजन लिंकेज। Oxygen bond. ठीक है। सो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा साइक्लिक, वी विल मेक इट अ हेक्सागोन where carbon number 5 and carbon number 1 are joined to each other by the oxygen linkage। ये अब ये आ गया कार्बन नंबर 1 पे H, ये आ गया OH, ये आ गया कार्बन नंबर 2 पे H OH, ये कार्बन नंबर 3 पे ऑपोजिट है OH H, ये कार्बन नंबर 5 पे H OH और ये कार्बन नंबर 6 पे 5th पे CH2OH एंड दिस इज H। तो आपका सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हमने यूज करना है तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनो स्ट्रक्चर। एंड दिस इज विच फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज? Alpha. अल्फा ग्लूकोज। और जब मैं इसको बीटा ग्लूकोज बनाऊंगा तो मैं इस OH को फ्लिप कर दूंगा टुवर्ड्स दिस साइड।
कुछ पता लगा आपको ये? शुड आई टेल यू वन बाई वन कार्बन फ्रॉम द प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड रिजेंबल इट विद दिस वन की क्लियर है ये? Sir, clear. सो अब मैं बना रहा हूं दोनों स्ट्रक्चर। तुम देखो ये आ गया, हेक्सागन बनाना है आपने। ये फर्स्ट कार्बन पे HOH HOH OHH HOH and OHH. This is alpha D glucose. अब मैं बना रहा हूं इसका बीटा स्ट्रक्चर। अब ये देखो, बस ये डिफरेंस आएगा। ऑन द फर्स्ट कार्बन दिस इज and the first carbon, rest all structure remains the same. Now this is beta D glucose. For alpha glucose or beta D glucose, they are the anomers of each other. क्लियर हुआ ये? Yes, sir. तो करूं डिफाइन एनोमर्स। Yes, sir. तो लिखो एनोमर्स आर, जो आपके सामने बनाए गए ये एनोमर्स हैं। एनोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स। Anomers are the stereoisomers which differ in their configuration around carbon 1. Which differ in their configuration around carbon 1. तो आप देखोगे आपके जो अल्फा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज है, they are just differing in configuration around carbon 1. They are called as anomers. Anomers are the stereoisomers which differ in configuration around carbon 1. क्लियर हुआ ये? Yes, sir. अब एक बार पिछला स्ट्रक्चर दोबारा से देख लो ये। सो सेंटर वाला स्ट्रक्चर इज स्ट्रेट चेन, whereas the left one and the right one are the cyclic. और जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे साइक्लिक को, तो हम इनको ग्लूकोपाइरेनोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि आपको जो ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में मिलेगा, दैट विल बी एदर बी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। और जब आप उसका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे, देन योर अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज विल चेंज टू the straight chain structure. Clear? So that's why some properties of the glucose are explained by its straight chain structure, and some properties of the glucose, they are explained by its cyclic structures. Understood? Yes, sir. Yes, sir. पर तुम्हारे को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि ड्रॉ द अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज और रिप्रेजेंट द म्यूटा रोटेशन। ये जस्ट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। I have told you in this chapter we very clearly know the things that will be coming. So what you expect is the word muta rotation क्या होता है, what is muta rotation, and then you should be knowing the anomers, what are anomers, and you should be able to draw the glucopyranose structure of alpha glucose and glucopyranose structure of beta glucose. So for that you have to make a hexagon जिसका जो राइट कॉर्नर है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन,
which is linking carbon number 1 and carbon number 5. So ये carbon number 1 है. I repeat, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4, this is 5, and this is carbon number 6. Right? Yes, sir. So this is what is all important about glucose. There are 2-3 reactions. One is the reaction with hydrogen iodide. Second is the reaction with the bromine water. Third is reaction with nitric acid. ये 3 reaction important हैं. Then you have word mutarotation important. And the third, last one is the word anomers. These are the 5 things that you should be knowing about glucose. Understood? Yes, sir. Should we move further now? Yes. और अगर तुम्हारे को ये म्यूटा रोटेशन वाला जो ये पूरे का पूरा कंसेप्ट तुम्हें लगेगा कि इट हैज टू बी डिस्कस्ड प्रॉपर्ली इन सम ऑफलाइन क्लास, आई विल डू इट. प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. Right? Yes, sir. Now we start with disaccharides. So what are disaccharides? On hydrolysis, give 2 monosaccharides. 2 monosaccharides. Disaccharides are the carbohydrates which on hydrolysis give 2 monosaccharides. ठीक है. So first one, I will try to discuss the first one as maltose. Now maltose formula is C12H22O11. This is maltose. 3 डाइसैकेराइड हमने डिस्कस करना है, सबका फॉर्मूला सेम है. अब माल्टोज की मैंने हाइड्रोलिसिस की, it will give me C6H12O6 plus C6H12O6. अब चाहे सुक्रोज है, चाहे वो माल्टोज है, चाहे वो लैक्टोज है, यही रिएक्शन आएगा. तो जब माल्टोज की बात करेंगे, दिस इज माल्टोज, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो ग्लूकोज. सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, बैंक एक्सेस. यस यस प्लीज. सर ये कोई रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज. दिस इज माल्टोज. हमने इसको वाटर में डाला इन एसिडिक मीडियम. इट ब्रेक्स डाउन इनटू द 2 मोनोसैकेराइड्स एंड बोथ द मोनोसैकेराइड्स आर सेम. आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज? यू विल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. दैट्स इट. गॉट इट? And if this is lactose, then it will be glucose and galactose. So galactose यानी कि जब भी किसी डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस होगी, एक ग्लूकोज पक्का होगा. अगर माल्टोज है, बोथ आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. लैक्टोज है तो इट विल बी 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज. और अगर ये सुक्रोज है, सुक्रोज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है हमने. इफ दिस इज सुक्रोज, देन this will be glucose and this will be fructose. Understood? Yes, Yes, sir. sir. So question NCERT में जाए चेक कर लेना, बैक एक्सरसाइज में. what are the products of hydrolysis of? So अब अपने आप दाओ, if the products are G and G, glucose and glucose, what is the name of the disaccharide?
Maltose. And if it is glucose and galactose, Lactose. Lactose. and if it is glucose plus fructose, Sucrose. Sucrose. then it is sucrose. Got it? Yes, sir. अब बताओ जो ये अब इस ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब अब बताओ दिस जी और जी जब आपस में ज्वाइन कर जाएंगे तो बताओ ये चीज क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, sir. Because maltose के अंदर these two glucose units are joined to each other. In lactose, this glucose and galactose are joined to each other. And in sucrose, this glucose and fructose are joined to each other. So this linkage which joins the monosaccharides, इस linkage को हम बोलते हैं Glycosidic. glycosidic linkage. The linkage which joins the monosaccharides in a disaccharide or a polysaccharide is called as glycosidic linkage. Right? Yes. अब ये देखना, अब मैं सारा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं. I'll just make the outline of it. Right? ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है. Yes, sir. ये this is the next glucose molecules. Yes, sir. OH थोड़ा सा ओपन अप करके लिख रहा हूं मैं इसको, और इसका आ गया OH. Now this is one molecule of glucose, this is another molecule of glucose. अब क्या होगा? When these two molecules will join together, ये होगा. क्या निकल गया? H2O. One molecule of H2O is removed. Everybody sees it. Yes. And when one molecule of H2O is removed, now these two units will be joined by an oxygen linkage, where this oxygen linkage, ये वाली, this oxygen linkage is called as am I understood? Glycosidic linkage. अब मुझे बताओ जो आपके सामने स्क्रीन पे जो बनी हुई चीज है इसको तुम क्या बोलोगे? Maltose. It is maltose. That's very right. ये maltose है and this is how in maltose two glucose are joined. और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये यहां से ब्रेकअप कर जाएगा और दोनों तरफ OH OH लग जाएगा and you will get two molecules of glucose. Understood? Yes, sir. समझ आ गया सबको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? Yes, sir. ओके. तो आपको जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखो, जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं क्लास, मतलब वी गिव मार्क्स अगर बच्चा ये लिख देता है. बिकॉज इधर एक ग्लूकोज का यूनिट है, यू विल से इट इज अ मोनोसैकेराइड हेयर, इट इज अनदर मोनोसैकेराइड हेयर. सो दो मोनोसैकेराइड्स को जो ये लिंकेज ज्वाइन करती है, वी कॉल इट एज,
So लिखना definition, ethereal linkage, because this is ether group, ethereal linkage which joins two or more monosaccharides, which joins two or more monosaccharides in a disaccharide or polysaccharide, in a disaccharide or polysaccharide is called as glycosidic linkage. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, glycosidic linkage and ethereal linkage is same. Ethereal linkage को बोलते हैं हम glycosidic linkage. Okay, sir. The ethereal linkage which joins the monosaccharides तो दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स को जो लिंकेज ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. Okay, Done? sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now I would be discussing a bit about sucrose. तो मुझे बताना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज they will combine to सर ये form. नोट नहीं करना कुछ Sucrose. किया नहीं तुमने नोट? ये वाला नहीं। नोट किया है तुमने? Yes, sir. ये आपने दो हेक्सागन बनाने हैं. बस फर्क ये रखना है कि ऑक्सीजन बनाना है राइट कॉर्नर पे और उन दो हेक्सागन को आपने इस ऑक्सीजन लिंकेज से ज्वाइन कर देना है. दैट विल बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. राइट? Yes, sir. Should I start with the sucrose? Yes. Okay. I'm representing what I have to tell you. C12H22O11 is sucrose. इसमें हमने water add किया in acidic medium. It gives me C6H12O6 glucose and C6H12O6 fructose. Now, the specific rotation of sucrose is plus 66.5. Specific rotation of glucose is plus 52.5, the equilibrium value. Because जब आप ग्लूकोज का solution बनाओगे so you know that your cyclic alpha form or cyclic beta form will change into the equilibrium open chain structure जिसकी rotation है 52.5 and the specific rotation of fructose is minus 92.4 degree. अब बताओ sucrose is a dextro or a levo compound? This value is positive. Do you understand? Sucrose is a dextro compound. Yes, sir. Yes, sir. And sucrose on hydrolysis gives us a mixture. और मिक्सचर में आप देखोगे एक की स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 52.5 और एक की स्पेसिफिक रोटेशन है माइनस 92.4. सो दिस मिक्सचर इज Levorotatory. सो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज.
This phenomenon is called as inversion of sucrose. तो जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, we find that a dextro compound changes into Levo. a levorotatory mixture because this levo-rotation is more. This levo-rotation is more. So this phenomena, अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो कंपाउंड है उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है that is getting inverted. From a dextro compound, it is changing into a levo compound. So this phenomenon is called as inversion of sucrose, and hence sucrose is sometimes also called as invert sugar. पहले इसको अच्छी तरह से देख लो, then I will explain the whole phenomenon. I will dictate it what is to be written. ये कुछ क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. अब एक बार लैंग्वेज सुनना और लिखना मत कुछ भी. Sucrose is a dextrorotatory compound with a specific rotation in front of you. What on hydrolysis it gives us an equimolar mixture of glucose and fructose, where the levo-rotation of fructose is more than the dextro-rotation of the glucose. So overall mixture is levo-rotatory. So this phenomenon of change of optical rotation from a dextro-rotatory to levo-rotatory is called as inversion of sucrose, and hence sucrose is called as invert sugar. Clear to everyone? Yes, sir. Other people can also tell me, are you getting it or not? Yes, sir. So write down, Sir. sucrose is a dextro-rotatory compound. Sucrose is a dextro-rotatory compound. No need to cram up these values. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लूकोज जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो है और आपका जो मिक्सचर है वो लीवो है. That's it. So sucrose is a dextro-rotatory compound, and on hydrolysis it changes into a levo-rotatory mixture. On hydrolysis, it changes into a levo-rotatory mixture. So this phenomenon of change of optical rotation from a dextro compound to a levo mixture is called as inversion of sucrose. And hence sucrose is called as invert sugar. So why is sucrose called as invert sugar? This has been questioned quite a number of times. What will your answer be? Yes, please, anyone? Why is sucrose called as an invert sugar? Because on hydrolysis, its optical rotation gets inverted. I repeat myself. On hydrolysis, its optical rotation gets Inverted. From a dextro compound, it changes to a levo mixture. Okay. Yes, sir.
So disaccharides में I have given you two things. One is inversion of sucrose. You can keep on noting the important things. Inversion of sucrose क्या है? Why sucrose called as invert sugar? And third is the products of hydrolysis. Let me show you the question NCERT के through. Let me give me a moment. Everybody sees the NCERT? Yes, sir. ये देखो, this was all I was trying to explain. एक बार यहां से भी देख लो. सेंटर में आपका है स्टेट चेन स्ट्रक्चर and you can see the oxygen of the fifth carbon is attaching to the carbon of the first carbon and this hydrogen goes here. So on the left side you find that the first carbon and the fifth carbon, they are joined to each other. On the right side, the first and the fifth carbon are joined to each other. So these are the beta form and the alpha form. These are the cyclic structures and center में है open chain structure. Clear? Yes, sir. Then we come to ये. Now pyrene. अब left में देखो, pyrene is a, the pyrene is a cyclic dash. Complete the statement. Pyrene is a cyclic ether. पायरेन एक साइक्लिक ईथर है. तो आप देखोगे जो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, दे रिजेंबल विद द पायरेन. दे हैव 5 कार्बन्स and 1 oxygen. So that's why we call it as pyranose structure. So if the OH is towards this side, then it is alpha, and if OH is towards this side, the anomer is beta. ये दोनों एक दूसरे के anomers हैं. Got it? Yes, sir. Yes, anybody has a question? No. No, sir. उसके बाद ये आ गया आपका फ्रक्टोज. फ्रक्टोज के बारे में आप याद रख रहे हैं कि फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, एंड इट इज अ ये इट इज अ कीटोहेक्सोज. जैसे ग्लूकोज में देयर इज अ एल्डिहाइड ग्रुप, आप देखोगे आपके फ्रक्टोज में देयर इज अ कीटो ग्रुप. Structure of fructose is not required at all, please. उसके बाद अब मैंने आपसे डिस्कस किए ग्लाइकोस दिस डाइसैकेराइड्स एंड वी डिड दिस वर्ड. Between two monosaccharides unit, there is an ethereal linkage which we call as glycosidic linkage. अब ये देखो आपका सुक्रोज. सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पे आपको मिला ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब साइन देखो, दिस इज नेगेटिव साइन लीवोरोटेटरी, पॉजिटिव साइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, and then you see the glycosidic linkage. So you see a glucose molecule and a fructose molecule are joined by which linkage? Glycosidic. Now this is the paragraph I told you. Just go through it. Sucrose is a dextro compound, but after hydrolysis, it gives us dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Now, since the levo-rotation of fructose is more than the dextro-rotation of the glucose, the mixture overall is levo-rotatory. So, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation
that is from positive dextro to negative levo. This phenomenon is called as inversion of sucrose, and hence the sucrose is called as invert sugar. Then you have maltose, no structure to be done. But what is it? जिसको मैंने एनसर्कल किया है वो क्या चीज है? Glycosidic linkage. Glycosidic linkage. That's it. This is glycosidic linkage. And you see that this glycosidic linkage is joining two monosaccharides, which both are glucose. So this is maltose. Then you have lactose. So ये है आपकी glycosidic linkage, and this glycosidic linkage is joining one galactose molecule with one glucose molecule. So ये हमने अभी तक किया है यहाँ पे. And now let me show you the question. ये पहले ये देखो, ये एक बार जल्दी से देखो. पहला मोनोसैकेराइड हमें आता है, रिड्यूसिंग शुगर हमें आता है. देन यू 14.5 व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये देखो, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ. इस टाइप के क्वेश्चन आने आपको. व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज. हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. अब 14.9 देखो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. अब रिएक्शन आना है, इन तीनों में से एक आना है, बस इन तीनों में से एक आना है, दैट्स इट. So reaction of glucose with HI, reaction of glucose with bromine water, and reaction of glucose with Nitric acid. nitric acid. और ये जो मैंने आपको कल कराया, this is I told you on that day, if one question I have to pick from this chapter, it will be this. So enumerate the reactions of glucose which cannot be explained by its open chain structure. One of the most important question of this chapter, I repeat. So I have given you 5 to 6. It does not give reaction with sodium bisulfite. It does not give reaction with 2,4-DNP. It does not explain the existence of anomers, alpha and beta glucose. It does not explain the phenomenon of mutarotation. ठीक है. So Yes, यहाँ तक जो ये 14.10 तक जो पूरे का पूरा ये आपका बैक एक्सरसाइज है, this is all related to carbohydrates. अब जिसमें अभी हमें पॉलीसैकेराइड्स करना है, वी हैव टू डू स्टार्च, वी हैव टू डू सेलुलोज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14.4 देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स. अब आपको पता है, अगर आपको मोनोसैकेराइड पता नहीं है तो आप इसमें से डाइसैकेराइड पिक करो. विच वन आर डाइसैकेराइड्स हियर? maltose, एंड Maltose. lactose. rest all are monosaccharides. Because we should be knowing 3 disaccharides, sucrose, maltose and lactose. तो उसमें से 2 यहाँ पे हैं, उनको छोड़ के बाकी आर ऑल मोनोसैकेराइड्स. अभी ग्लाइकोजन हमने करना है, दैट्स व्हाट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नाउ. So now we start with this polysaccharides. So polysaccharides, what do you know about polysaccharides? Polysaccharides are the carbohydrates which on hydrolysis give large number of monosaccharides. ठीक है. So let us start with the first one. What is the name of the first? Starch. Now starch is the main storage polysaccharide of the plants. जो चीजें यहाँ पे आती हैं, पहले हम ये देख लेते हैं. Let me go it my way. So write down starch. Starch is also called as amylum. Starch को amylum भी बोलते हैं. The formula is C6H10O5N, where N can be from 200 to 1000. ठीक है. यहां तक क्लियर?
Yes, sir. Now, starch is a white amorphous powder. Keep on writing. Starch is a white amorphous powder, sparingly soluble in water. White amorphous powder है and very less soluble in water. It's a non-reducing sugar. That is, it does not reduce Tollens reagent and the Fehling solution. It is a non-reducing sugar. Now we come to the composition. ये बहुत important question है. The two components of starch are amylose and amylopectin. The two components of starch are amylose and amylopectin. Amylose is water-soluble component which constitutes about 15 to 20% of the starch. ठीक है? Please write it down. Amylose is the water-soluble component and it is water-soluble. On the other hand, amylopectin is water-insoluble component and constitutes about 80 to 85%. So this is 15 to 20% water soluble. This is 80 to 85% water insoluble. Understood? Yes, sir. Please write a line. The aqueous solution of amylose gives a blue color with iodine solution. तो आपने देखा होगा स्टार्च का टेस्ट अगर हमें करना है तो हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं. It gives a blue color. So actually that test is given by the amylose component which is water soluble. So the aqueous solution of amylose, it gives a blue color with iodine solution. And amylopectin does not give a blue color with iodine solution. Amylopectin does not give a blue color with iodine solution. Got it? Yes, sir. अब आपका जो चाहे वो एमाइलोज है चाहे वो अमाइलोपेक्टिन है, ये एमाइलोज है. सो एमाइलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. बस so what four things you should know about amylose. Amylose is water soluble. Second, it constitutes 15 to 80% of the starch, 15 to 20%, sorry. Third, it gives a blue color with iodine. And third, it is a linear polymer of it's a linear polymer of alpha D glucose. Now, what you should be knowing about amylopectin. Amylopectin सबसे पहले is water Insoluble. It constitutes 80 to 85% of the starch. Does not give a blue color with iodine solution. And it is a branched polymer of alpha D glucose. So they are quite the opposite of each other. If you know the properties of one, you should be knowing about the other. And please keep in mind, ये structures नहीं करने हैं. Structure जो मैंने बोले हैं, only they are to be done. Are you Okay, clear sir. about starch के बारे में? Clear हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
But the one question about starch, if I have to pick up, will always remain what are the components of starch? Then we come to cellulose. Cellulose occurs extensively in plants and it is the most abundant organic substance in the plant kingdom. Formula, general formula इसका भी same है C6H10O5N, where N can have values from 300 to 3000. It is insoluble in water. And it is a chief structural material of cell wall of the plants. Wood contains almost 50% cellulose. Cotton is almost 95% cellulose. तो जो wood है 50% of it is cellulose, और cotton लेते हो तो that is almost 95% cellulose. Clear? And it is a linear polymer of beta D glucose. Structure not to be done. It's a linear polymer of beta D glucose. Understood? Yes, sir. Any bio student would like to tell something about the starch? आपको the starch cannot be digested by Human. Humans. humans. Cannot digest the starch because they do not contain the enzyme required. The enzyme which is required to digest the Cellulase. starch is cellulase, which is present only in the stomach of Ruminants. Ruminants. the animals called as ruminants. So like you have cow or buffalo, etc. So they contain the grazing animals. Rather, we should call them as grazing animals. So they contain this very enzyme cellulase, and as a result, they are able to digest. Okay, up to this point. Yes, sir. Then glycogen. Carbohydrates are stored in the animal body as glycogen. So आपको पता है carbohydrates are the instantaneous source of energy. But if there is excess of carbohydrate, that will be converted into the glycogen. So it is the form in which the carbohydrates are stored in the animal body. It is also called as animal starch because it resembles in structure to amylopectin. A बहुत important line है, please mark it. Why is glycogen called as animal starch? So that is because it resembles in structure to amylopectin. It has a branch structure like amylopectin. It is present in liver, muscles, brain, etc. And whenever the body needs glucose, the glycogen is broken down back into the glucose. So this is about the carbohydrates. Then the importance. Do I need to discuss the importance? No, sir. Thank you. Carbohydrates are essential for both plants and animals. They form a major portion of our food. ये क्वेश्चन देखना. Glucose or sucrose are soluble in water, but cyclohexane or benzene, they are not soluble. Why? Oh. So that is because glucose and sucrose. Yes, answer it.
नो वन। The polarity. तो आप बोलोगे ग्लूकोज एंड सुक्रोज दे कंटेन अ polar OH bonds. उनके अंदर polar Hydrogen OH, bonding. so they can form hydrogen bond with water. ठीक है. Whereas this benzene or cyclohexane, they are non-polar, they cannot form hydrogen bond. What are the expected products of hydrolysis of lactose? Glucose plus galactose. अब देखो लैक्टोज और गैलेक्टोज में कुछ कॉमन है ना, ये वाला पार्ट. Yes. तो आप लैक्टोज और गैलेक्टोज, तो आप याद रखो जब भी किसी की हाइड्रोलिसिस आनी है, ग्लूकोज तो पक्का ही आना है. अगर वो लैक्टोज है इट विल बी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. अगर वो माल्टोज है इट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. And if it is sucrose, it is glucose plus fructose. Then comes the question number 14.3. How do you explain the absence of aldehyde group in the presence of in the pentacetate of D-glucose? I would love to hear it. That is because it does not react with. It does not react with NH2O. That's very nice. It NH2O. does not react with hydroxylamine. मतलब अगर हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लूज इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑन इट, सिंगल मार्क ऑन इट. राइट है? Yes, sir. So in the next class I will be starting with the proteins. And एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, because of some function in my school there are some busyness I will be having, so you people will cooperate a bit. Would you Yes, or sir. not? ठीक है. सर हरसिमरन सर तो बोल रहे थे आपके पैर में चोट लगी है. यही कुछ चल रहा है लाइफ में. Okay, sir. Get well. ओके. एंड क्या था, भुला दिया ना सब कुछ. तुम्हारा एक टेस्ट है मैंने बोला हुआ, नेक्स्ट वीक रखना है वो मैंने टेस्ट. प्लीज गिव मी द सिलेबस योरसेल्फ. Aldehyde and ketones. ठीक है. Please mark it. Next week you will be having a test of aldehydes, ketones and carboxylic acids. Understood? Subjective or objective? We will keep it subjective. इसमें मैं कुछ अपने selected question डालूंगा और Okay, sir. ठीक है. It will be a Yes, sir. subjective test. कुछ conversions करेंगे, कुछ distinguish करेंगे, कुछ missing links करेंगे. So it will be a subjective test. Please prepare the chapter, the most important chapter. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Okay.